So what we are going to do is this class. We are going to have a study Lorentz कुछ साल हमने कहा था कि फैक्टर आ रहा था हमारे पास रूट ऑफ 1 by root of 1 minus b square by 2 square. That factor was required to measure two time intervals between two reference frames. एक रेस्ट हो सकता है, अदर मूव हो सकता है, या two reference frames relatively move with regard to each other because their clocks are not exactly synchronized. So ये Newton's time है here. Newton time method is equal to t prime. The value of time was L. See. So the same length को भी हमने कहा था length जो measurement of length है. If you want to relate them, you have to relate them by L is equal to L naught by root of 1 minus b square. उसको हम कहते हैं Lorentz factor या correction factor. So how we can, in the context of how that correction factor or Lorentz factor को जो अगर हम गैलीलियन इक्वेशन जो हमारे सिंपल लॉ हाउ कैन रिलेट हाउ कैन मॉडिफाई दिस क्योंकि हमारे पास अब नया आया ना मॉडिफाइड लॉ दिस ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, अब तक वी आर स्टडीइंग गैलीलियन लॉ जो सिंपली एक्स इक्वल इट वाज व्हाट या तो हमारे पास एक्स इक्वल एक्स माइनस बी या एक्स इक्वल. Okay, so if you want to relate two velocities, two distances, जैसे कोई बॉडी ऐसे पे कोई मूव कर रहा है यहाँ से two reference frames यहाँ से तो ये रेस्पेक्ट ऑफ अदर बॉडी मूव तो वही पे how we relate the distance x इसको explain to the dot it can move away from it to minus side from this point. Keeping velocity at a distance here. This velocity is vt is also distance. है तो नहीं? तो कितना ये चला यहाँ से यहाँ so that means subtract x minus v. या अगर it is coming towards you, so we can have plus of minus factor. So how we can relate two relative velocities between two particles या two reference frames which are having relative motion. तो ये हमारे पास सिंपल है क्योंकि हमारी जो ये डेफिनेशन P है P the notion of P was changed for two reference frames. ठीक है, P is equal to मान लीजिए गामा टाइम्स ठीक है ये गामा is equal to this was the Lorentz correction. ठीक है, अब in presence of that how should we relate two reference frames? For example, if one of them is moving at velocity t and another is moving, so what we are going to do, we just write simply enumerate these things. So x prime is equal to x minus c. तो हमने कल कहा था जो perpendicular frames होंगे what I should say there is no modification to the length perpendicular to the things. ठीक है, so that's why you can take y is equal to y by एक क्योंकि अगर बॉडी को 3 डायमेंशन में रोटेट करेगी तो you can have all the three थोड़ा सा वहाँ equations completed होगी. If you want to just solve Lorentz equation in all particle x में भी मूव कर रहा है, y में भी मूव कर रहा है, फिर z में भी मूव कर रहा है थोड़ा, ठीक है, then you cannot take y bar is equal to y bar. Since we are only having a relative velocities in some particular coordinates x and y and z में things are, ठीक है, you are seeing things. So you are comparing two relative frames which are moving in one dimension, one direction. ठीक है, how we are going to relate it. ठीक है, so this is this जो traditional way में हमारे पास था ये z prime is equal to z and t prime is equal to t.
ये हो गया किसमें हमारे पास कवर, इट वाज सिंपल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अभी हमने लोरेंज फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं किया। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस रिटन इन दिस बुक, ठीक है। वो इसको एग्जाम्पलीफाई करेगा, इसको थोड़ा सा वो सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो व्हाट the correct equation 4 is replaced by a nu, by a nu जो हमने कल कहा, that should incorporate क्या incorporate करना चाहिए, टाइम लाइन, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, इसका मतलब क्या है, एंड नॉन सिंक्रोनिटी ऑफ मूविंग क्लॉक्स। ये तीन अल्फाज है, these ideas, तीन आइडियाज को हमको इनकॉर्पोरेट करने का। Once we incorporate these three things, our laws will get modified. अब ये तीन आइडिया क्या है, इनके टाइम डायलेशन का आइडिया, that moving clocks move slower है। दूसरा है relativity of simultaneity, उसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट इवेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बल्ब जल रहा है, ठीक है, सडनली अब मैंने स्विच ऑन किया, लाइट, सो आई एम एट रेस्ट, मैं किस टाइम पे वो ऑब्जर्व करूंगा, लाइट हैज स्टार्टेड, बट समबडी इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट थिंग, तो वो किस टाइम पे वो भी रजिस्टर करेगा इवेंट, मैं ये रजिस्टर करूंगा इवेंट, सिंस इट मे बी मूविंग अवे फ्रॉम दैट थिंग। सो गैलीलियन रिलेटिविटी में था सिंपली कि कितना वो दूर जा रहा है x माइनस वी, तो यू कैन कंपेयर इट। अब ये यहाँ एक सटल आइडिया है, यहाँ सटल आइडिया ये है कि यू आर रजिस्टरिंग एन इवेंट, द क्लॉक्स फ्रॉम विच यू आर रजिस्टरिंग द इवेंट, दैट उसमें वो पोजीशन है ना जहाँ से आप मेजर टाइम करते हो, सो दैट कम्स इनटू इफेक्ट। Unless and until we don't synchronize the two clocks by some factor, so our measurements will disagree, our measurements will, तो उसी में हम कहते हैं relativity of the simultaneous observation of events from two reference frames, कैसे, ठीक है। so it will lead, ये हम intrinsically मानते हैं कि they are non-synchronous, देखो क्या, क्लॉक्स आर सिंक्रोनस, अगर दो रेफरेंस फ्रेम, गैलीलियन रेफरेंस फ्रेम में द क्लॉक्स वेर सिंक्रोनस, सिंपली अगर कोई इवेंट हो रहा है, he may observe the event at some later time, but you could simply relate by some transformation, वो उससे कितना मूव अवे कर रहा है या क्लोजर कर रहा है, will add that factor। अब यहाँ मसला आ रहा है कि द क्लॉक्स, द इवेंट्स अगर कोई रजिस्टर कर रहे हैं, that also depends upon from where you are measuring the things, ठीक है। तो उसको कहते हैं नो, द क्लॉक्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया, इट्स बिट सटल इन द सेंस दैट यू कैन नॉट मेजर, द आइडिया ऑफ टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, द आइडिया ऑफ टाइम इज नॉट, the idea of time is relative, measurement of time is relative, and when we take into that in consideration, so this idea of no, we have to synchronize the clocks, और clocks को कैसे synchronize कर सकते हैं, शायद हमारा measurement में contradiction नहीं आएगा, तो we have to incorporate this Lorentz factor, Lorentz factor incorporate करके फिर हमारी measurements में this is the idea, ठीक है। So what we are doing is simply जो हमारे पास x is equal to x minus v है, will introduce the factor of now, ठीक है। और अगर हमारे पास डिस्टेंस है टू, we got the moving length also,
get contracted from two reference frames. इसलिए कोड है, अगर आप रेस्ट से मेजर करोगे कोड, और ये स्पेस है दिस somebody the code is moving or you are moving, है ना? अब ये है कि या अगर कोड मूव कर रहा है, आप देखोगे ना कि ये इसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट मेजर करोगे, बट द प्रोसेस अगर कोड मूव कर रहा है, अगर आप इनिशियल पॉइंट वही रखोगे जो पहले था, तो ये और ये आएगा, so the length will not be seen. You have to take into consideration time का factor, ठीक है? So how and this factor, how to measure time in that sense. So you will have this d is equal to 1 by d. It's one distance, it's measured in some relative reference frame, ठीक है? इसमें ये भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल 1 by b square by c square, if b is equal to c, ठीक है? If जो velocities they are relatively the same velocity, this factor can cancel, so you can have the distance will come out to be c, ठीक है? Otherwise, we have to take this consideration into this factor into consideration. अब ये है कि अब ये जो है गामा कैन भी यहाँ है माइनस, यहाँ पे क्या है गामा कैन भी माइनस प्लस पार्टिकल द रेफरेंस फ्रेम should be relatively away or towards each other, जिसकी वजह से तो जो हमारे ये जो इक्वेशंस आई थी, तो वी हैव टू मॉडिफाई, तो वी हैव इसको कहते हैं गैलीलियन। अब इसको हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट Lorentz transformation of गामा का फैक्टर आएगा। Since y and z are suppressed, we are not taking along y and z directions, we are perpendicular, you can say y and z simple transformation. But if you have a three-dimensional Lorentz transformation, you can also do that exercise. Matrix components or the components, for example, electronics में बहुत चीज ये होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई फील्ड है, तो उसमें है ना डेल डॉट ई, तो वो है डी बाय एक्स बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी वाई डी वाई। समटाइम्स ई फील्ड्स एंड डी फील्ड स्पेस में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, दे डोंट ट्रांसफॉर्म, इट्स द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विल स्टडी, इसको हम टेंसर भी कहते हैं। तो उसमें फिर हम बाय फैक्टर ज़ेड फैक्टर ये कोऑर्डिनेट्स भी ले सकते हैं, ठीक है? सिंस वी हैव नॉट टेकन मूव अलोंग दैट दिस थिंग, वी कैन टेक इट लाइक दिस। इसी तरह ये जो अब ये वाली इक्वेशन है, सो आई जस्ट इसमें भी गामा है, सो टी माइनस डी बाई स्क्वायर एक्स। आप ये इक्वेशन थोड़ा सा यू जस्ट ये आपको मैं थोड़ा एज अ होमवर्क एक्सरसाइज, so it's simple. So the factor of t also, so we can solve this equation vis-a-vis that equation. You relate them, you will get the factor of t equal in terms of, for example, some another reference frame is moving. So आप इसको डायमेंशन भी देखो, है ना, b by c, एक b कट जाएगा, ठीक है? ये x by c आएगा, that's also t, that's t prime. So it's t minus t prime, है ना? So ये एक t prime एक अपना है, ये relative time, ठीक है? That's it. अब ये you just see how can algebraically just see it, otherwise I will show you more. So this is known as relativistic dictionary, ठीक है? तो नॉर्मल डिक्शनरी है, नॉर्मल गैलीलियन रिलेटिविटी है, एंड इफ द रेफरेंस फ्रेम्स आर मूविंग रिलेटिवली विद रिगार्ड टू ईच अदर, हाउ कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम चेंज, हाउ वी कैन रिलेट द मेजरमेंट्स इन स्पेस एंड मेजरमेंट्स इन टाइम इन टू रेफरेंस फ्रेम्स व्हिच आर रिलेटिवली रिगार्ड टू ईच अदर, ठीक है? और दे मे आल्सो बी, अगर रेस्ट पे है तो यू हैव सिंपली t इज इक्वल टू 0, ठीक है? दैट विल आल्सो रिलेट वन ऑफ and there is something called something
simultaneity, synchronization, ये तो यही अल्फाज है, synchronization and time dilation. Okay. Time dilation तो ये है, time moving clocks. Simultaneity जब हो गई जाएगा, simultaneous. Two events which are simultaneous each other may not be. That may not be simultaneous to each other. मतलब आप कोई इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो उस टाइम पे हो रहा है, ठीक है, बट आपके लिए उस टाइम पे नहीं हो रहा है. For two observer observing an event, that event has taken at that time only, and both of them are waging, but it is not happening at that time only for these two individuals observers. उसके लिए अपने टाइम पे होगा, इसके लिए अपने and that depends upon where from you are measuring, space का idea. So your measurement of time depends from where you are measuring events, which was not the case for Newtonian time. वो टाइम वो इवेंट वहीं उसी टाइम पे ये भी ऑब्जर्व करेगा, ये भी ऑब्जर्व करेगा, स्पेस का पता नहीं था. अब ये इसमें सिर्फ ये फर्क आएगा how you can synchronize the clocks. Clocks it may sometimes lag, actual clock may lag another clock, or it may be ahead of that time. For time t is going to be 0, so we can say give a reference frame. One reference frame is this, then we say things. So either two things are away from each other, or they are coming, or they are closer to each other. So in former case, time का जो factor है कम आएगा, it will register the events before, and in the later दूसरा reference frame will register the event later. कितना फर्क आएगा? So in the same way, हमारे पास है Lorentz transaction को काम दें, तो delta x will be equal to 1 by gamma times delta x prime. And delta x जिसकी क्या है, ये डिस्टेंस है x2 minus x1, है ना? ये भी है x2 minus x1 prime. वो भी क्या है? जो इवेंट हो रहा है, पहले x पे हो रहा है, साइमल्टेनियस दूसरा x2 पे हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन x2 minus x1. बट अगर रेफरेंस फ्रेम पर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा x2 प्राइम minus x1 प्राइम, ठीक है? x1 प्राइम एंड ये जो मेजरमेंट ऑफ इवेंट्स they can only be related by this gamma. Galilean reference frame में x2 minus x1 prime would be equal to this, ठीक है? And this velocity. पर यहाँ पर ये दोनों अब हमको ये जो सब है ना, इसको इधर जो आइंस्टाइन ने जो हमने स्टार्ट किया था VAB ABC है, इसको VAB प्लस ABC, अगर कोई रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा है A to B, B to, तो it will be velocity of A to B and B to C. तो इसको हमने किया था ना ऐसे, लॉ हमारे पास आ रहा था प्लस ABC डिवाइड बाय 1 प्लस BBC बाय C स्क्वायर, ठीक है? और वेलोसिटी AB को BBC को C, तो it will come out or at very high velocity it will come out to 0. It is simply related to addition of velocities, calculation addition. Okay. हम कैसे आएगा from our
understanding of relativity कैसे आएगा. What we do is simply जो velocity है dx by और जो dx prime है ऐसे it's equal to dx minus v और dt prime है v1 ये वाला है इस गामा टाइम्स dt minus v by c square dx. Up from this it's right. You have very small differential line element and differential time element है ना. ये dt आएगा ये dx आएगा. तो हमको देखना है velocity कैसे represent करेंगे. Velocity कैसे represent करेंगे from this and this. Divide this by this. dx by so I dx by dt prime equal to u. तो ये गामा का पता आ जाएगा dx minus dt divided by dt minus v by c square dx. ठीक है? u divided by denominator by dx by dt. तो ये इसको dt के साथ डिवाइड करो dt के साथ तो v माइनस ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ ये b आएगा. it will be dab so it's just dx by dt minus b divided by double it will be 1 dt by dt हो गया 1 minus b by c square dx by dt हो गया b तो ये b square है ना. एक और b यहाँ से dx by dt b square. तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई dx by dt सर ये जीरो नहीं होगा ऊपर सर dx by dt minus b dx by dt हो गया सर जो उसके न्यूमरेटर में है ना dx by dt minus b b by c square हो गया. you divide both sides by dt dt by dt हो गया 1. सर जो इसके न्यूमरेटर 1 minus b by c square सर डिनोमिनेटर नहीं न्यूमरेटर. हाँ dx by dt आएगा इसका है कि b by dt ये b dt है. हाँ ये b dt है ना. सर वही मैं बोल रहा हूँ ना. अब dx by सर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को dt से डिवाइड किया. सर जो न्यूमरेटर में dx by dt को v बन जाएगा ना v minus v 0. हाँ ठीक है वही तो है. अरे v 0 होगा ना कैंसिल हो जाएगा. ये एक्चुअली एक की वेलोसिटी u है दूसरी की वेलोसिटी v है. two reference frames which are in presence of Lorentz transformation. So you can write it जो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए we can write it as equal to u equal to v. एक वो अब इसको u के साथ it's basically one reference frame which is moving with regard to this velocity u है and velocity v है. So it's like this. If you see two velocities, velocity of u, ये v, ये u है, ये v. So this is the final law which we got in terms of इसी को हम क्या कहते हैं Einstein's velocity actually. ठीक है? Velocity. So if we want to write it in terms of this way, in terms of a, for example, u को आप b से रिप्रेजेंट करेंगे, u बार को आप b a c के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, and b को आप b c b is equal to minus b b c. So you can say
that you can जो final जो law है addition rule का for हमारे पास come out to be BAC is equal to BAB plus BBC plus BAC. Now what you can do is you can at least read the various problems in the book which are going to exposition, which are going to follow up. The ideas are, you have done ideas in generalization, how you can concretize them. For example, twin paradox revisited. For example, on the 21st birthday, one twin gets a moving sidewalk which carries to star X. Okay? At a speed of this 4/5c. Her twin brother stays home when the traveling twin comes to star. So she arrives, ये कह रहा है कि the other twin, एक twin यहाँ था वो दूसरी स्टार पे गया, जब वो वापस आया तो इसका स्टार का जो भी है twin वो बूढ़ा हो गया as compared to the other person. Basically the moving clocks जो होगी ना, since it's in motion it was slow. So the idea is this. We do the various problems. They are exposing on the ideas.